Hello everyone, once again I welcome you all in class 7 biology class. As you all know me, today I am going to teach you about the rest of the topic of chapter Kingdom Classification 1. Previously I told you about the Kingdom Protista, so related to that I am going to start the other topics of Kingdom Protista, in which first I am going to tell you about the respiration in amoeba. That means which type of respiration takes place in amoeba, how it takes place. So amoeba, as you all know, it is the unicellular organism, okay, which is having the thin plasma membrane. These are aquatic and now they are present, that means ki these are found in the aquatic habitat. So the surrounding, they are having the higher concentration of oxygen. So they are going to respire by the process of diffusion. How the process of diffusion? This is the process in which the substance move from higher concentration to the lower. जहाँ पर ज़्यादा concentration होगी वहाँ से वो कम concentration की ओर move करेंगे. Surrounding में ऑक्सीजन की concentration ज़्यादा है compared to the cytoplasm. So oxygen is going to move in. ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर जाएगी सेल में और डिफ्यूज़न की प्रोसेस से वो पूरे सेल में यूटिलाइज होगी. नाउ आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, वॉट एवर द CO2 इज लेफ्ट, दैट CO2 इज गोइंग टू रिलीज बाय द बॉडी इन द सराउंडिंग. सो दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस by the process of diffusion in the amoeba. Now let's move toward the important topic, reproduction. So reproduction in amoeba, it takes place by two processes. First is the binary fission and second is the multiple fission. Binary means two, bi means two और multiple means as you all know many. और fission का meaning होता है to break down और टूट जाना. So look at it here, this is the first type of reproduction, that is binary fission. In binary fission what happened? The cell of amoeba, they are going to stretch. Cell क्या होती है, stretch होती है. और न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू टू. न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है. एज अ न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू द टू, the cytoplasm is followed by this and cytoplasm is again going to divide into the two cells. And after the division of cytoplasm, these two cells are detached, वो आपस में अलग हो जाती हैं. They are going to form the two daughter amoeba cells. That means one parent cell is divided into two. That's why it is known as the binary fission. Now look at this type of, that is a multiple fission. Multiple fission what happened? This amoeba cell, pseudopodia, इनके जो false feet होते हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द हार्ड वॉल विच इज़ नोन एज द सिस्ट वॉल. ये बहुत ही हार्ड वॉल होती है. विद इन द सिस्ट वॉल अगेन द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू द माइटो डिवीजन. दैट मीन्स नंबर ऑफ nucleus is going to form 1 2 3 4. Many nucleus are going to form within the cyst wall, and this type of multiple fission takes place during the unfavorable condition. That means कि उनकी favorable condition जब नहीं है, जब इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन. अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. नाउ दिस आफ्टर दी फेवरेबल कंडीशन केम, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सिस्ट वॉल है ये ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और जितने भी ये न्यूक्लियस हैं ये एनवायरनमेंट में लिबरेट होते हैं एज अ अमीबा. दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारे अमीबा डॉटर सेल्स बन गए, एक सेल से नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बने. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मल्टीपल फिजन. नाउ लेट्स स्टार्ट द अदर किंगडम, दैट इज द फंगस. So let's start the another kingdom, kingdom 3, that is fungi. So when we are going to talk about the fungi, in fungi most it is the characters of fungus is plant like, they are having the vegetative plant like body. So let's see whatever the characteristic they are having. So first characteristic I told you that they are having plant like body. Second most important characteristic, they are non-green
and non-photosynthetic. Third characteristic, they are multicellular. All the fungus are multicellular except, अभी यहाँ एक exception है, except yeast. Yeast is a unicellular fungus. Next, they are eukaryotic, that means nucleus is advanced and nuclear materials are present within the cell. Now they are having membrane bound cell organelle but plastid absent. Okay, so this is the some basic characteristic of the fungus. Now one more thing, the nutrition, it may be parasitic or it may be saprotrophic. That means nutrition may be parasitic or saprotrophic. That means कि वो क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन को दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है, या तो उसके ऊपर ग्रो करके लेगा या डेड डिकेइंग चीज़ों से न्यूट्रिशन लेगा. नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस. It is a well-known fungus which is also known as bread mold, and let's see the structure of this bread mold structure, Rhizopus. This type of structure is there in the Rhizopus. This ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो उसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर की ओर उग रही है, इन्हें कहते हैं हाइफे, जो स्टेम टाइप स्ट्रक्चर है. हाइफे हर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं टू टेक द न्यूट्रिशन. हाइफे से अटैच होकर नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजॉइड्स. ये राइजॉइड्स भी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ this bulb like structure is known as sporangiophore. Why these are known as sporangiophore? Because this sporangiophore having the round dotted structure which are known as spores. These spores are gamete and responsible for the reproduction in the Rhizopus. That's why. So sporangium, इसको sporangiophore या sporangium भी कहते हैं, और because it bears the spores, that's why it is known as the sporangiophores. Now let's see which type of nutrition takes place in Rhizopus. If we are going to discuss about the nutrition is Rhizopus, Rhizopus are saprotrophic. And what is saprotrophic? As I told you, that means they depend on dead and decaying things. They depend on dead and decaying material. Sapro का मीनिंग ही होता है dead and decaying. Now what they are doing, they are just going to grow on the dead and decaying things, and they are just going to release some enzymes. उसके ऊपर कुछ enzymes release करते हैं, और whatever the nutrition is there, that nutrition is absorbed by the Rhizopus and they take the nutrition by the dead and decaying materials. So this type of nutrition takes place in the Rhizopus, which is also known as bread mold.
आप सब ने ब्रेड मोल्ड को देखा होगा, राइजोपस को। आपके यहाँ ब्रेड होती है, जब बहुत दिन तक रह जाती है तो कभी कभी उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर उग जाते हैं, दे आर द राइजोपस। एंड राइजोपस का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू सी विद द माइक्रोस्कोप देन यू आर एबल टू सी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट राइजोपस. So this is all about the today's topic. Next topic we will discuss in the next video, that means related to reproduction, respiration and other things. Till then, bye bye and thank you.